Yeah, hello, can you all hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, what about others? Only few people are left. Okay, so now I'm going to show you a video so that you can clear your concepts more easily. Okay. करता हूँ मेरे चैनल में। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने इनिशियली वाइब्रेशन से उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनको तो गाइस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशन के अंदर वाइब्रेशन होता। Can you see the video? Can you see the video? Yes, sir. Okay. So you just take a note of this type of vibration and what are the period and frequency and all. Okay. क्या है, जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई मेरी बॉडी है Can you इनिशियल पोजीशन के can you understand Hindi or you need in English? Will be used to explain in English only the explanations. Is it okay for all of you? Is it only okay for all of you? English is okay. Just check it out. If you don't understand, tell me. के अलोंग कुछ मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, कुछ अपनी पोजीशन के अलोंग क्या करती है, वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट मतलब कुछ ऊपर जाती है, नीचे जाती है, यानी कि फ्लक्चुएट करती है, आपकी फ्लक्चुएट करते हैं, दैट द वाइब्रेशन। जैसे व्हेन इलास्टिक बॉडी सच एज अ स्प्रिंग, when elastic body such as a spring, a beam, a shaft displaced from the equilibrium position by the application of external forces, मतलब अपनी मेन पोजीशन से वो क्या हो, डिस्प्लेस्ड हो या फिर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, किसकी वजह से, आपके एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। एंड दे आर रिलीज्ड, दे एग्जीक्यूट अ वाइब्रेटरी मोशन, मतलब कि वो उसको क्या करें, रिलीज करें, तो वो आपका किस तरीके का मोशन करेगी, दैट्स अ वाइब्रेटरी मोशन। द सेम टाइम आपको एग्जांपल भी पता होगा कि कैंडिडेट साइकिल चलाता हुआ जा रहा है कहीं पे भी, और साइकिल चलाते हुए भी अगर उसको रोड के ऊपर से जा रहा है तो उसको एक वाइब्रेशन फील होगा। अगर मैं बात भी कर रहा हूँ आपके सामने, देयर इज साउंड वाइब्रेशन, यहाँ से साउंड वेव निकलती है तो उसके लिए साउंड वाइब्रेशन आता है। तो सेम टाइम आपके नंबर ऑफ वाइब्रेशन बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह पे आते हैं। तो गाइस, सबसे इसके बाद अपन बात करनी है अपन को कि टर्म्स यूज्ड इन वाइब्रेशन मोशन। अगर आपको ये नहीं पता है तो अपन वाइब्रेशन कुछ भी नहीं कर सकते। अपन को सबसे पहले क्या सीखना होगा, टर्म्स यूज्ड इन वाइब्रेशन मोशन। फर्स्ट वन, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन और टाइम पीरियड। तो आपका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन और टाइम पीरियड होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई वी कंपोनेंट अगर मेरी एक साइकिल कंप्लीट करने के अंदर जितना टाइम लेता है, देयर इज अ टाइम पीरियड। या फिर अगर मैं ये बोल दूं कि एक इंटरवल को खत्म होने में जितना टाइम लगता है वो मेरा टाइम पीरियड होता है।
तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज अ टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इटसेल्फ, मतलब कि ऐसा मतलब जो टाइम है आपका, जो टाइम इंटरवल है वो अपने मोशन को रिपीट करता है खुद इटसेल्फ। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन सेकंड, मतलब कि जो आपका टाइम पीरियड होता है उसको एक्सप्रेस किया किसमें जाता है, आपका सेकंड्स में किया जाता है। इसके साइकिल कि इट इज अ मोशन कंप्लीटली ड्यूरिंग इन वन टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर जितना आपका मोशन कंप्लीटेड किया जाता है देयर इज साइकिल। तो मैंने वही चीज बताई कि एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है देयर इज अ टाइम पीरियड, और आपका एक टाइम पीरियड में जितना आपका मोशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे। आगे देख लेते हैं, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल डिस्क्राइब्ड इन वन सेकंड, मतलब कि एक सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइकिल अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इट्स यूनिट इज साइकिल पर सेकंड, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी साइकिल पर सेकंड। और उसको अपन क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। एच जी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। तो आगे देख लेते हैं। और टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, मतलब कि टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन मतलब कौन कौन से आपके मोशन होते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है आपका कि जो एक्सटर्नल लोड होता है ना वो नहीं होता, मतलब आपके जो वाइब्रेशन है वो खुद से होंगे, मतलब नेचुरली आपके वाइब्रेशन आएंगे। आपके वाइब्रेशन नेचुरली आएंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होगा। जैसे when no external force act on the body, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा आपकी बॉडी के ऊपर, दिस इज अ नेचुरल वाइब्रेशन। After giving it an initial displacement, then the body is said to be under free or natural vibration। ये वाली बात ध्यान रखने की, देयर इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी बॉडी में इनिशियली डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, मतलब हल्का सा खींच देता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन आएंगे उनको नेचुरल वाइब्रेशन कहेंगे। उसके बाद दी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उसको क्या कहेंगे, फ्री और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये समझने की बात है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि इसके डेरिवेशंस हैं बहुत सारे के फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन के, और आपके फोर्स वाइब्रेशन के भी डेरिवेशंस हैं। तो फोर्स वाइब्रेशन when the body vibrates under the influence of the external load, मतलब कि अब पहले तो बात हो रही थी आपका एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए, अब क्या बात हो रही है आपका एक्सटर्नल लोड की वजह से अगर आपके वाइब्रेशन होते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उसके में कुछ चेंजेस आते हैं, तो मेरा वाइब्रेशन कैसा हो गया, आपके फोर्स वाइब्रेशन। Then the body is said to be force vibration. The action force applied to the body is periodic distribution force created by the unbalance, मतलब कि जब अपन उसके ऊपर कुछ एक्शन लोड लगाते हैं तो उसकी वजह से, देखिए यहाँ पे the action force applied to the body is a periodic distribution। periodic distribution मतलब डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया फिर लगा दिया फिर छोड़ दिया, दैट्स अ periodic distribution for the created by unbalance, मतलब कि वो आपके जो वाइब्रेशन है उसको अनबैलेंस करता है। अब इसके बाद आपकी बात आती है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि when the frequency of external forces, when the frequency of external forces is same as that of the natural vibration, अगर आपकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो फ्रीक्वेंसीज आई है वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो ये जो कंडीशन निकल के आती है वो होती है आपकी ऐसा रेजोनेंस की कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हो जाती है आपकी, रेजोनेंस की कंडीशन। आगे देख लेते हैं।
Sir, can't hear anything. Okay, I'm playing it from before only. Huh? पहले तो बात हो रही थी Now आपका are you एक्शन hearing? लोड नहीं होना चाहिए। अब क्या बात हो रही है आपका एक्ट लोड, उस आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उसको क्या कहेंगे, फ्री Are और you able to hear it? Are you able to hear it now? Are you able to hear it now? Yes, sir. Yes. नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो ये समझने की बात है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि इसके डेरिवेशंस है बहुत सारे के फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन की, और आपके फोर्स वाइब्रेशन की भी डेरिवेशंस है। तो फोर्स वाइब्रेशन when the body vibrates under the influence of the external load, मतलब कि अब पहले तो बात हो रही थी आपका एक्शन लोड नहीं होना चाहिए। अब क्या बात हो रही है आपका एक्शन लोड की वजह से अगर आपके वाइब्रेशन होते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो मेरा वाइब्रेशन कैसा होगा, फोर्स वाइब्रेशन। Then the body is said to be force vibration. The action force applied to the body is periodic distribution force created by the unbalance, मतलब कि जब अपन उसके ऊपर कुछ एक्शन लोड लगाते हैं तो उसकी वजह से, देखिए यहाँ पे the action force applied to the body is a periodic distribution। periodic distribution मतलब डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया फिर लगा दिया फिर छोड़ दिया, दैट्स अ periodic distribution for the created by unbalance, मतलब कि वो आपके जो वाइब्रेशन है उसको अनबैलेंस करता है। इसके बाद आपकी बात आती है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि when the frequency of external forces, when the frequency of external forces is same as that of the natural vibration, अगर आपकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो फ्रिक्वेंसीज आई है वो आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो ये जो कंडीशन निकल के आती है वो होती है आपकी ऐसा रेजोनेंस की कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हो जाती है आपकी, रेजोनेंस की कंडीशन। आगे देख लेते हैं लास्ट वाइब्रेशन, जैसे डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से होता है, वाइब्रेशन आपको की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है और बहुत कम हो जाती है, तो डैम्पर होता है मेरा। जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो हर बार क्या होता जाता है आपका, कम होता जाता है एम्पलीट्यूड, तो उसकी जो आपके फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी होती है वो भी रिलीज होती जाती है। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, व्हेन देयर इज द रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड ओवर द एवरी साइकिल, मतलब कि उसके जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर रिडक्शन होता जाता है एवरी साइकिल के अंदर, और द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड वाइब्रेशन, मतलब कि ऐसे वाइब्रेशन को अपन क्या कहेंगे, दैट्स अ डैम्प्ड वाइब्रेशन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द क्रिएशन अमाउंट ऑफ द एनर्जी caused by the vibration is the always dissipate in overcoming the frictional resistance to the motion। कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी फिर वो रिलीज की गई होगी, फिर यहाँ पे एनर्जी वो रिलीज की गई होगी, यहाँ पे एनर्जी वो रिलीज की गई होगी, यहाँ पे एनर्जी वो रिलीज की गई होगी। मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि अगर आपका एम्पलीट्यूड ओवर द साइकिल आपका कम होता जा रहा है, दिस इज द डैम्प्ड वाइब्रेशन। इसके अंदर कंडीशंस होती है क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, तो वो आगे जब हम करेंगे तो उसमें देख लेंगे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स में, तो वो कंडीशंस भी बात करेंगे। जैसे इनिशियल फेज और द स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वाइब्रेशन, तो अभी ज्यादा बातें नहीं देखेंगे यहाँ पे, आगे देख लेते हैं गाइस। टाइप ऑफ फ्री वाइब्रेशन, मतलब अपन फ्री वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके अंदर अपन के तीन तरीके के वाइब्रेशन होते हैं, देयर इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और टॉर्सनल वाइब्रेशन। जो लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन होते हैं, जो आपकी शाफ्ट है उसकी एक्सिस के पैरेलल, मतलब क्या है, आपकी जो एक्सिस है उसके मैंने परपेंडिकुलर में सॉरी उसके पैरेलल अगर आपके वाइब्रेशन होंगे तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। अगर आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होंगे तो दैट्स अ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अगर आपकी एक्सिस के अलोंग आपका ट्विस्टिंग मोशन यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड किया था, दिस इज अ टॉर्शनल वाइब्रेशन। तो दैट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ द वाइब्रेशन। आगे वाली वीडियोस में हम कुछ डेरिवेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, टेक्निकल क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कर आप
टू वाईफाई स्टडी। लोग वेट कर रहे थे वाइब्रेशन कब होगा, वाइब्रेशन कब होगा। तो फ्रेंड्स वाइब्रेशन आज से स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल आप लोग जान। Sir, Yeah. Say. I can't see anything, sir. You don't understand anything? I can't see anything, sir. It's blank. Hello. 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 Can you hear me? Yes, sir. What happened? Someone said Yes, something. sir. Someone said me something Yes, just. sir. Bolo. Sir, I can't hear anything like that. Now I am hearing, sir. Okay, now you are hearing. Before, did you Yes, understand sir. the video? Sir, Hmm. can you repeat the video, sir? Because in the middle, there is some lag. I can't hear Okay, properly. but are you able to understand? No, sir. No. Yes, sir. No, Which sir. part? Which part you don't understand? From the beginning, sir. All parts are. ठीक है, All parts, sir. ठीक है, no problem. So basically, in vibrations, so in vibrations, a body is moving. Suppose. Now here it has been discussed about longitudinal and transverse vibrations. So what is longitudinal and transverse vibration actually? Suppose when elastic bodies such as a spring or a beam, spring or beam are displaced from the equilibrium position. That means what? If those things will stay in their state of rest, maybe in the state of natural state where they actually should be. So that is known as what? That is known as the equilibrium position, right? Do you know that? Do you know that? Hello? Hello? I need some responses. Do you know that? Yes, sir. So if that equilibrium is being distorted, so that is actually that phenomenon. That phenomenon is basically called as what? Vibration. Now we can see vibration in our daily lives, right? I'm just explaining from the beginning only. Forget about this video. Now we can see vibration in daily life, right? In every system there is vibration. Now this longitudinal and transverse means what? Suppose if the vibration takes place in the longitudinal direction, then it is called longitudinal. And if transverse, then it is called transverse. Okay. Now, as per the materials, there is one term now, period of vibration or time period. Suppose some vibration is occurring, then it will repeat what? It will repeat after a certain interval of time, na? Yes or no? ये vibration after a certain interval of time repeat करेगा. So that time after which this vibration actually repeats, okay, that is known as what? That is known as your time period of vibration. That is known as a time period of vibration. I've given the link of the video in the chat box. You can see.
Is my voice getting broken down, students? Is my voice getting broken down? No, sir. Now it's okay, sir. It's okay, na? If you have any, if you face any problem, tell me, huh? I'm finding out some lag in the network actually. That is why maybe your video was lagging. Now, did you understand up till now? That means period of vibration means it is the time interval after which the motion is repeated itself. That means that vibration repeats after some time, na? So that is known as time period of vibration or period of vibration. So it is generally expressed in what? Seconds. Okay. Now we go to our next one. That is known as cycle. Cycle means what? Cycle means it's totally round, right? So amount of motion or the motion that is completed during one time period. In a single time period, how much amount of motion is actually completed? That is known as what? Cycle. Okay. After cycle becomes frequency. So what is frequency actually? It is the number of cycle that is described in 1 second. That means per second, how much cycles is happening, that is known as frequency. Or that cycle, that means one cycle is what? From one point it starts and it again comes to that other point. That same point means that is a cycle, right? So in that one rotation is known as cycle. Now what frequency is what? In 1 second, how many cycles? Those kind of cycles actually happens. That is known as frequency. That means what? It is a number of cycles described in 1 second. Now its unit is known as hertz. HCRTZ, hertz. Okay. So that hertz you can just write it as HZ or hertz. Okay. So you can write that in that manner. Now after that, it was explained about free or forced vibrations. So what is free and what is forced vibration actually? Okay, so what is free and what is forced vibration? So free vibration means when no external forces act on the body. So that means what? In the last class, also previous class, so we discussed. That means there is no external force acting on the body. Suppose we are giving some initial displacement on the body, and the body is said to be under free natural vibration, and the frequency is called free or natural frequency. Okay. Sir, Hmm. sir, in resonance, there is equal in the frequency, sir, no? Uh-huh. In resonance, there is equal in the frequency in free and force, external frequency and the natural frequency will be equal in the resonance, sir, no? एक बार फिर से पूछो, मैं समझ में नहीं आया. रिजोनेंस में सर क्या आपका हाँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है क्या Ah, दोनों का the जो frequency, that is equal. Equal means what? That frequency becomes very big. That is why resonance. In resonance, what happens? There is one frequency, natural frequency.
and there is Okay, another sir. frequency of the body which is moving over it. तो दोनों जब मिक्स हो जाता So, है तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाता है ना, तो इसके लिए वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. okay, okay, fine. ठीक है, अभी डाउट क्लियर है? Okay, fine. So this is what free vibration. Now in free vibration, initial something displacement is given, and the body is vibrating of its own. There is no external forces that is acting on the body. So coming to the next one is forced vibration. So forced vibration, that means what? When a body vibrates under the influence of external force. मतलब क्या है external force? Can you say me? Can anyone say me what do you mean by external force? Load, sir, load. Load, maybe some external disturbance. Suppose you are trying to move something, that is also an external force. You are applying force on something and it starts vibrating. That is also an external force. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So this is what force vibration. That means that when a body vibrates under an influence of external force, then the body is said to be force vibration. So the external force applied to the body is a periodic disturbing force that is creating that unbalance. Now this external force, as someone said me just now, this external force that is being applied, and that the natural vibration or the natural frequency of the body, the vibration at which it is vibrating naturally, that thing if it becomes same, then we call it as what? Resonance. Okay? Then we call it as resonance. So this is how the phenomenon of resonance takes place. Now, next what they explained was damped vibrations. So what is damped vibration actually? The vibration gradually decreases, right? Suppose if you are maybe trying to move, if you take a scale at the edge of your table, and then try to move it up and down. So eventually, what happens? It first moves up and down, up and down, up and down, and eventually it becomes small, that vibration, and then gradually decreases. No? That kind of vibration is known as damped vibration. So that is known as damping. Got it? That is how that damping takes place. In case of damping, what happens is So, that sir, बोलो बोलो so बीच में मत पूछो, मेरे को damping कंप्लीट करने दो. vibration. Uh, मेरे को कंप्लीट करने दो, उसके बाद पूछो. समझा? So eventually what happens, because the flow disturbs, na? So eventually what happens, that vibration gradually decreases and dies off, and that thing is known as damping. So you can ask questions now. Please ask after I complete. You can ask questions. What is that? so, uh, pre-vibration can be a transversional or longitudinal, sir. Na? It can be transverse or longitudinal. Free So, vibration. sir, how can be that pre-vibrational type can be occur in transpersonal? देखो, अगर ट्रांसवर्स में फोर्स का इफेक्ट हुआ तो ट्रांसवर्स में होगा, अगर लॉन्गिट्यूड में हुआ तो लॉन्गिट्यूड में हुआ होगा वाइब्रेशन. सपोज तुम, इफ यू आर टेकिंग अ बीम, if you are compressing from the ends, there will be one type of vibration, and if you are compressing it from the body, there will be another type of vibration. So this is basically what transverse and longitudinal. समझा? कैसे लोड अप्लाई करता है, कैसे उसका फोर्स अप्लाई होता है, the directions from which the force and load are being applied. So in that way, you'll have to sort it out. Which one is that?
So if you have any doubt, you can just ask me. If you have any doubt, you can ask me.